Om Shanti. ओम शांति बोला लगे तो सही न आए हैं बचपन में ऐसे ही हाथ में दो हाथ में. अच्छा अब मोहिनी बल ओम शांति अच्छी तरह से लगेंगे तो आए हैं Say Om Shanti in such a way that you could feel that you have arrived here. You are here. Just to say with that feelings, Om Shanti. ओम शांति निर्मला बहन ओम शांति Nirmala Ben Om Shanti. भाई सभी याद हो देखो तो सही रहे अच्छा अच्छा बोलो बहन It's a very good balance to have deep silence and loud Om Shanti. I think that deeper silence one has, maybe louder we can say Om Shanti. Because when it's in silence, then of course it's for the self and also others experience silence from us. But when we have to say Om Shanti, we want every soul in the world not only to feel Om Shanti, but to hear our words. So maybe that might be the significance that he likes us to say very loudly, Om Shanti. Yeah, she says because it's a very collective voice of love when we say Om Shanti, so it has to be loud. Yes. I think that that's one thing that when Dadi is able to hear Om Shanti and she is happy, that's very important, right? Just to say hello, I know that you all had been here for a while. And one of the thought I had this morning, being part of this interfaith dialogue, that everything we have is so unique. And when Baba says in Murli that all the paths belong to the path of bhakti, there is only one path of knowledge that becomes so obvious, so clear from whatever being spoken and whatever is being shared, because one person, he has come from New York and he was comparing that how other organizations or other moments, the way they expand and their activities are so much into different kinds of activities, but the way Brahma Kumari's organization is growing is very universal, very spiritual. Not only that, but looking at our sacred spaces, they feel that it's so different than going into any other sacred spaces like temples, mosques, and ashrams. And so I was thinking that in today's world, what Baba has offered us, what Baba has given us to offer to the world is so unique, it's so special. And not only unique and special, but it's highest when it comes to purity, it comes to truth, it comes to every lifestyle, the way we live, way we speak, and I think everything is highest, the quality, and also when the way expansion is taking place is in a very, very beautiful way. So it was very interesting to have this thought and further realization that why Baba compares that a day will come, then people will know that there is only one path of knowledge, there is one path which really is of truth, but all others are paths, but they are paths of bhakti. So that was very striking thought I had this morning, because there is no comparison. But then because the truth is so simple that we don't have to wrap it and put it in a package or manifest into different ways, but it's so natural. Sometimes even we forget that that's our life, like we are so naturally into being Raj Yogis, being pure vegetarian, whatever we have adopted as our principles, it has become so much natural into our lives that sometimes even we forget that how important, how significant and valuable is actually our principles which Baba has taught. So appreciation
when it comes, and acknowledgement which comes from others also sometimes makes us kind of underline into that these are the teachings of Baba, these are teachings of God. So I know that as Brahmins, that's not only our faith. You know, when people talk of different faiths, but our faith is so different because we are meeting as interfaith. So I was thinking if somebody had to ask me what faith you belong, what I would say. Because others will say, I belong to this faith, this faith. I can't say belong to faith of Brahma Kumaris. But what faith you think we must say we belong to? Faithful. That's good. Faithful to God. What else? Faith of truth, faith of God, faith in what kind of faith, what you call. Yeah. You know, I was thinking that, when it comes to, of course, we introduce ourselves, I represent and I'm BK, but when it comes to being part of the interfaith, then what words we could use? Can anyone think? Can anyone? Original faith, universal faith, faith of love, faith of the tree. What else? Still it doesn't. Original of peace, yes. Daddy wants some more answers. Seems to be interesting topic. Faith of Supreme Soul. Hope and change. Purity and non-violence. Faith in self and God. We have to find a brand for us. Huh? More answers. Dadi also likes to hear more answers. Faith, the religion of transformation. Religion of transformation. What else? पांडवों ने कौन ठहरे हुए हैं? हाथ उठाओ. Those of you who are staying in Pandav Bhavan, raise your hands. Thode hi bahut. बाकी सब यहाँ ठहरे हुए हैं. The rest of you are here. यहाँ ठहरे हाथ उठाओ. Those who are staying in Gyan Sarovar, yeah, Everyone. all of them are here. Very good. Good. अच्छा. तो क्या करे? चले जंप लगा के 8 बजे तक बैठेगी मैं. नहीं? ऊपर. ऐसे क्या विचार है? अगर खोला है तो पता नहीं. क्यों ट्रांसलेशन में डबल टाइम जाता है? लगेगा 5 मिनट. Daddy has this thought to go ये सहना है ना? harmony hall so that we don't take double time in translation. But we're trying to see if it's open or lights are on. ठीक है, open है. Daddy says it takes, you are okay? कहते हैं यहाँ खुश हैं. आप लोगों what you all want? You want to stay here? कहते हैं यहाँ अच्छा है, नजदीक बैठ. नजदीक बैठ. अच्छा. Family feeling. अच्छा फैमिली फीलिंग. ओके जो कहे. हाँ जी. Okay, Dadi agrees. Okay. आपको ये वाला माइक देना. तो आप बैठी रहो. या ये माइक आपको दें, ये मैं ले लेती हूँ. नहीं मुझे अच्छा है. कोई अच्छा है. एक्सरसाइज चाहिए. Told her if she wants this mic, she नहीं चाहिए, says दादी को ऐसे she है. wants exercise of her hand. So Dadi stand लेके आता है. हाँ? Stand. ये भारी है माइक. ये भारी है माइक. Stand पर. भारी नहीं है, हल्का. अच्छा. नहीं चाहिए दादी को. फिर से कहती हूँ ओम शांति. अच्छा ट्रांसलेशन आप करती है. ये करेंगे. अच्छा तो कुछ अच्छा वो जो बात बीच उसका में आप जवाब. शुरू करो, फिर हम बीच में बोलेंगे. चिट चैट करेंगे. चिट चैट. So Dadi will begin and Moini Ben will join in between. चिट चैट. पहले अंदर साइलेंस में जाओ. So go into deep silence.
जब हम अंदर साइलेंस कहते हैं तो अंदर चले जाते हैं, माना अंतर्मुखी हो जाते हैं. When we say silence, we go deep within and become introverts. जब साइलेंस कहते हैं तो बुरकुटी के बीच में आत्मा बैठ जाती है. When we use the word silence, we realize ourselves as a soul seated in the center of the forehead. तो यहाँ बैठे हैं या अंदर गए हैं. While sitting in the center of the forehead, we go inside. तो जैसे आज बाबा ने कहा ओम शांति कहते शांति धाम चले जाते हैं. So when we say Om Shanti, we also see ourselves in the abode of peace. यहाँ बाबा कहते हैं बाबा बाबा को प्रभु ईश्वर नहीं को, माना बाबा के पास बाबा के साथ बैठे हैं. Baba said today, don't use the word Prabhu and Ishwar. Instead, you use the word Baba because you're sitting with Baba now. जब पांडव भवन में यहाँ चलते फिरते थोरों को देखा तो दिन में खींच हुई, क्यों नहीं शाम को सबसे मिले. So Dadi was in Pandava Bhavan this morning. She saw few double foreigners. So she got pulled to come and meet all of you together here this evening. और ये नमाज शाम के टाइम में बाकी भी संगठन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. So at the time of dusk, when we all sit together in the form of gathering, we enjoy that very much. सवेरे अमृत वेला भी इकट्ठा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. When we do Amrit Vela together, even that we also enjoy it. तो सेंटर पर बैठे अमृत वेला कैसे करते हैं, क्लास में मूली कैसे सुनते सुनाते हैं, फिर दिन भर में कर्म योग भी कैसे करते हैं, कितना डिफरेंट मधुबन और सेंटर में रहने वाले चाहे घर में रहने वालों को होता है. So there is a great difference between living in the center, living at home, waking up at Amrit Vela, doing Amrit Vela meditation, listening to the Murli, and spend the whole day as Karma Yogi. So the way we experience here, we experience in centers, we experience in the household is great contrast. मंत्र एक ही ओम शांति का है. मुख से बाबा, दिल से बाबा, हर एक कहता है, परंतु कितना अंतर है वो देखना जरूर है. या मधुबन दिखाई पड़ता है. So we use the same word Om Shanti and Baba. We say the word Om Shanti and Baba from our heart, but you can see the difference you experience when we use the same words here while you are here. तो मधुबन में आना, पाँव रखना या वहाँ बैठे तैयारी करना, तो क्या भावना से तैयारी करते हैं. So whether you have arrived here or whether you were there preparing to come to Madhuban, what was your feelings in the heart when you were getting ready to come here and when you arrived here? तो ये भी एक लिस्ट निकालनी है. You must. मधुबन में क्यों आते हैं, क्या मिलता है. So you can make a list. Why do we come to Madhuban and what do we attain when we come to Madhuban? कितना डिफरेंट है अपने जहाँ रहते उस स्थान और इसमें. And also make a list. What is the difference between while you are in your places, center or household, and what you experience here, the difference. वो जो प्राप्ति होती है कितनी यूजफुल होती है. All the attainments we have here become so useful. तो यूजलेस मेरे पास कौन सी बातें वो खलास हो जाती है, यूजफुल बातें मेरे पास आ जाती है. So then whatever is useless that is within me is finished and whatever is useful comes into my life. क्यों समय भी बड़ा सफल होता है यहाँ बैठे. Because while sitting here we are able to make use of your time in a worthwhile way. और समय को सफला करने के लिए संगठन भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ. And we also have the cooperation of the gathering to make our time, use our time in a worthwhile way. वहाँ सुनना और सोचना थोड़ा ज़्यादा है. In our places, we speak a lot and we think a lot. यहाँ सोचना भी कम, सुनना ज़्यादा है. But here you think less, but you listen to a lot. You listen a lot. इतना एनर्जी बच जाती है यार. So that is why we are able to save a lot of energy here. वहाँ सुनने में सोचने में खर्च होती है ना. Because in our places we spend our energy in thinking too much and speaking too much. अभी इसमें तो कांत बताओ ना बरोबर So राइट Dadi है. says, what do you think with what Dadi is sharing? You think is it right? If you feel right, give your signal by nodding your head at एनर्जी least. बनती रहती है ना. Here you keep on accumulating energy, don't you? खर्चा कुछ भी नहीं है ना. You don't spend anything. Do you spend anything? Any energy?
वहाँ खर्चा ज्यादा है, कमाई थोड़ी है ना, There you spend more and less income. ऐसे है ना. Is that right? जो साथ रहने वाले वो भी खर्चा हमारा बढ़ा देते हैं. And the one who live with us, they also increase our expenditure. ओ जो आने जाने वाले हैं, आते जाते वो भी तो हमारा खर्चा ही करते हैं. Even the people who come and go, they also make us to have more expenditure. तो संयोगी थोड़े होते हैं, बाकी योगी भी हम बने, संयोगी हमारे साथ सब रहे, तो थोड़ा फर्क बहुत है. Because there are very few souls who are cooperative, so to be a yogi and to be a cooperative soul, so there is a contrast between here and our places wherever we have come from. तो मधुबन में योगी और संयोगी ये बहुत अच्छा जो ऐसे देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, बनने को मिलता है. In Madhuban, we have the opportunity to understand, to know and to experience what it means to be a yogi and sahayogi, cooperative. जैसे बाहर वालों कहते हैं ना, सुनना वो कम, बेचारे सुनना नहीं शुरू करते तो हम कोशिश करते बंद करें. अब जो कम करे, सुने ज्यादा है, सोचे नहीं. When people come to us, we make sure that they speak less. We try to avoid them speaking too much, but they should listen to us more. नजदीक बिठाओ, दूर कोई भी बैठे नहीं, सब नजदीक आओ. Nobody should sit at the back far away. So Dadi wants in any double foreigners also sitting at the back. Please come in हाँ, सभी आओ. closer. अच्छा, तो सुनना है तो क्या सुनना है हमको? So if I have to listen, what should I listen to? जैसे मोहिनी बहन का भक्ति मार्ग में तो बहुत बहुत सुनना भी है, बोलना भी है, नाचना भी है, कुछ भी करना है. In the path of bhakti, we have to listen to a lot, we have to think a lot, and we do a lot of things. अच्छा है, मतलब समझते हैं ठीक है, अच्छा है, नहीं से तो अच्छा है ना. But then people think it's better, doing those things is better than doing nothing. और ज्ञान मार्ग कहता है क्या अच्छा है तू समझ. But the path of knowledge teaches us to understand what is good first of all. इच्छा कुछ भी न रहे, परंतु अच्छा क्या है वो समझ. So there should not be any desires, but understand what is good for you. इसमें सुबह की अंदर कोई भाई मेरी ये इच्छा है, मेरी तो मेरी जो पर्सनल है ना वो तो यहाँ मेरी क्या है, जो समय की भगवान की जो है ना वो ही मेरी है. So while sitting here, I should not have any personal my desires, but whatever is the desire of God, whatever is the desire of the time, that should be my desire, not my personal desire. तो जो ज्ञान मिल रहा है ना, समझ मिल रही है ना, वो यहाँ सब स्पष्ट देख करके यूज करने के लिए टाइम मिलता है. Whatever knowledge you have received, you have opportunity, time here to look at yourself and become like that. तो मेरे ख्याल में यहाँ हम सब फ्री है. We are all free here. लेटेस्ट हम सुना के आई हूँ, जो यहाँ मधुबन में या जहाँ मेगा प्रोग्राम होता है ना, तो एक लड़की को बाप जो है ना मटका रखता जाता है. बेचारी मटके डांस करती जाती है, फिर और मटके रखता है, फिर डांस करती है, फिर और मटके रखता है. तो बेचारी अंत तक बाप फिर ऐसा है, शक्ल ऐसी ना करे, मटका रखता जाए, वो डांस करती जाए. तो वो जैसे ही दृश्य मेरे सामने इस बारी बहुत आया है, तो बाबा हमारे से मटका रखता जाता है, पर डांस करती जा, मटका रखता जा, डांस करती जा. कौन सा मटका रखता है बाबा? नहीं, बाप जवाबदारी का ये भी कर. So Dadi is remembering one of the scenes that she has been observing in all these mega programs. No, they have a dance. A little girl usually do the dance, and the father has taught her to dance. It is a dance in which they keep on putting the one after the other, and the father makes sure that the girl doesn't change her face, but keep dancing, and more is put on her head. So that is reminding that what Baba does for us is he keep on giving us responsibilities after responsibilities like the urn. तुम डांस करती जाओ ये. So he had kept 108 urns on the head of that little girl.
तो कभी शक्ल हेवी न बने. So the face should not look heavy, even having so much on the वो head. देखता जाता, आंख दिखाता जाता, तो डांस कर मैं रखता जाता हूँ. So he used to look at her and say, "You keep dancing, and I will keep putting more and more." तो 10 स्टेप्स जो डांस वाला शरुना कहाँ है? Sharona is here. अच्छा, शरुना ने लिखा, भाई हिंदी भी लिख दिया. वो निर्मला बहन आपने पढ़ा है ना? नहीं ये पढ़ा है. क्या? जो वहाँ हमारी चिट चैट हुई थी ना, उसके 7 स्टेप्स की कैसे डांस करनी है, वो शरुना ने बहुत अच्छा लिखा. किन्होंने पढ़ा है वो? Dadi is talking about some chit chat they had in which they had discussed about 10 steps for dancing. So has anyone read about it? I don't know anything about it. So You had? yes. Good ना. अच्छा, उसकी हिंदी भी निकली है. गुलजार दादी ने कहा मुझे हिंदी निकलवा के दो. So it has been translated into Hindi also. It's in English, translated into Hindi also. हिंदी भी वहाँ ORC में निकल आया. अभी इन लोगों को ये कॉपी मिले. You will get, you should also get the copy, Dadi says. Okay, you will get it from the global office. तो क्या है, मधुबन में बैठे एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा याद ऐसी रहे जो योग युक्त रहे, यात्रा पर जा रहे हैं. So whilst being in Madhuban, our time should be used in a worthwhile way. Every hour, every minute, every second, every moment should be spent in a worthwhile way to such an extent that we are constantly in yoga and experience yoga yukt stage. मोहिनी बहन एक सुनाती है, जोक नहीं है पर रियलिटी है. Dadi is, Moini Ben is going to share something. This morning in dialogue, there is one co-chair who is co-chair with Sister Janki Marcus, was sharing a story about a saint, or no, about a rabbi that Translation chahiye? it was, Translation I don't chahiye. remember full, but it was, whole story was, Rajni, you translated for Dadi, right? That about listening, about reading scripture, like seeker. No, he was asking seeker, what do you watch? Been doing, is it while I'm reading or am I doing some practice? He said, no, I only want to watch that. How do you put your shoe in the morning? That means if you have to go somewhere, it's not question of just listening, but at least you should know the act of putting shoe on. So Dadi was saying that that's how it is when you have to move forward. You have to be on journey and you have to keep going on. What is really the first step is to put on shoe. That means now I'm ready to go. You know, something. So there is no need to beat your head too much, no need to read too much. So I have to go on journey, so first of all let me put on my shoes. तो ये मिसाल सुना, क्यों सुनाया, क्या था, उनसे पर्सनल भाई से बैठी थी. Dadi met that person personally, the one who was sharing this. तो मैंने कहा गीता पढ़ी है ना, कहाँ पढ़ी है? He asked, she asked him, have you read Gita? He said yes. तो ये लोग जब सुनाते हैं, कोई ना कोई शास्त्र का मिसाल सुनाते, कोई ना कोई कविता सुना लेते हैं. As these people, interfaith people, whenever they share, they always quote from scriptures and something or the other. तो मैंने कहा गीता के 2 बात है जो बाबा ने हमको सिखाई है. So Dadi told him, Baba has taught us 2 things that is in the Gita. जो कुछ सुना हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, भूल जा. So whatever you have heard, we have read, forget everything. All those things. जब हम ज्ञान में बाबा के पास आए ना, तो जो सुनना हुआ, हाँ याद है, हाँ 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 ऐसे ऐसे करते थे. अब वो याद करके हाँ करते. अरे बाबा जो सुना रहा है तू ध्यान से सुन तो सही. So in the beginning, when we came to knowledge, when Baba used to speak the knowledge, we used to nod our head thinking, oh, yes, this is also same thing that I heard in the scripture, read in the scripture. But at that time, we were not listening to what Baba was telling. So it is important to listen to what Baba is telling. So Baba said you have to forget everything. You have to listen to. तो सुनना हुआ याद है तो कहा हाँ हाँ जो पढ़ा है ना वही अच्छा बोला. फिर दूसरा कहेंगे नया तो नहीं था, सेम था जो फलान जगह मैंने पढ़ा था या सुना था. So when they are listening, they will remember the scriptures
oh, this is the same thing that is written in the scriptures. Then afterwards they say, oh, there was nothing new here. The same thing that I read in the scriptures I heard it again. इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान वाच, भगवान कौन सुना रहा है, रूहानी बच्चों भगवान सुना रहा है. So that is why Baba keeps on saying, God Shiva speaks, so that we are aware that I am the soul listening and God is speaking to तो me. मैंने कहा अर्जुन और भगवान के बीच में यही भगवान कहते हैं जो मैं सुनाता हूँ ना, भाई मामा चाचा को दे के संबंधों को भूल जा, फिर तुम मन को कर्मेंद्रियों को बस कर, फिर ये कर. कहते हैं भगवान अच्छा भला ये जो विद्वान पंडित आचार्य उनको क्या करूँ. So in the Gita, God speaks to Arjuna and says that forget all the bodily relations, including your own body. He says, okay, then what would I do with all these scholars and pandits? और जो उन्होंने सुनाया है वो क्या करूँ. So whatever they have spoken to us, so what would I do with those teachings? भगवान कहता है जो सुना हुआ है ना वो भूल जा. जो सुनाने वाले हैं विद्वान पंडित है वो भी कौरवों का अन्न खाते हैं. So whatever you have heard so far, forget everything, because those pandits and scholars are also the ones who belong to Kaurava community, the one who eats from the Kaurava community. So forget all those things you have heard from them. उनको भी मर्तबा चाहिए, पैसा चाहिए. Because they also are seeking for money and status. भगवान कहता है तू मेरे को याद कर, इन सब बातों को छोड़. So God says, remember me alone and let go of all these things. तब हमको हमेशा याद है गीता की बोल, परंतु अंदर से प्रैक्टिकल पुराने कर्मबंधन टोर, देश है तो दे के साथ जो कनेक्शन रखने वाली आदत है वो छोड़. So Dadi always remembers these versions from Gita that break all Kali-yugi karmic bondages and renounce all the bodily relationships. Whether it's desires or attachment, renounce all of them. फिर क्या कर. Then what should you do? छोड़, शांत पे मन मना भव. So become manmana bhav. उसमें कोई बात याद आए भूल जा ना. If you remember anything in between, forget all those things. भूल जा इसे कर में. Forget all of them in a second. तो भूलने की आदत भले आ जाए. So you can, instill the habit of forgetting in this way. तो जो है ना पुरानी भूल गई, सामने भी मेरे काम की बात है ना तो देखेंगे सुने. कहते हैं सामने देखते हुए ना देख. So even when you see something in front of you which is not useful for you, then while seeing, don't see it. तो न देख. कैसे न देखो, अरे न देख ना. So how not to see? So Baba says, yes, don't see if it is not useful for you. कोई कहे मैं आंखों से देखते न देखो. So some say that, but I am seeing through my eyes. How I should not see. तो इसलिए बाबा ने आज बोला मैं नैनों पर बिठा के ले जाता हूँ. मना कैसे लेके जा. तीसरा नेत्र जो मिल रहा है ना उनसे तुमको लेके जाता हूँ. So Baba said today that I take all of you children and may make you sit on my eyelids and take you back home. So how he does that? Through the third eye, he takes all of us back home with him. तो मैंने जब फेथ की बात पूछ रही थी तो परसों रात को गुलजार दादी हमारे साथ ही एयरपोर्ट पर आई. बड़ा लंबा रास्ता हवाए, बड़ा लंबा. तो सारी जैसे दिल्ली पता नहीं अंदर से अंदर चलते एयरपोर्ट पर आए. फिर उसमें बताओ. So when Moini Ben was asking this question to all of us about what faith, if somebody asks us, what do we say, what faith we belong to? So Dadi was remembering something they were talking with, Dadi was talking with Dadi Gulzar when Dadi was coming to the airport with Dadi Gulzar. It was a long way, so they were having some सारी दिल्ली पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच So they were going with a long route all over Delhi, long way. क्यों मेन रोड पर ब्लैक ये क्या था, रास्ते बंद थे, कुछ था. अच्छा ओके. फिर मैंने दादी को बोला ये हमारा अंतर में कितना अंदर से फेथ की कोई हद है क्या. पर ये सब जो दुनिया वाले दिल्ली को ऐसे बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, क्या दिल्ली थी 30, 40, 50 साल पहले क्या थी, अभी क्या है. अब वो तो ये बनाते जा रहे हैं. हम कहते हैं खलास होने वाली है, फिर यहाँ नई दुनिया आने वाली है, फिर ये आने वाली. इतना हमारा अंदर जो फेथ है ना,
इस तरह कोई फेथ कितना पक्का फेथ है ये सब. So Dadi was telling Dadi Gulsar that look at our faith, how strong and unbreakable our faith is. Look at Delhi, what it was 30, 40 years ago. Now they are building so many buildings. But we know within ourselves that all this is going to be destroyed and there will be new world on the same land. So our faith is so strong and unbreakable. तो इतना फेथ मजबूत होता जाता है. इसी के आधार पर ही हमारी याद है, इसी के आधार पर ही योग युक्त है, उसी के आधार पर ही यात्रा पर चल पड़े हैं. On the basis of this unbreakable faith, we are able to stay in the remembrance of Baba, we are able to maintain Yoga Yukta stage and we are able to be on the journey. याद ऐसी जो किसकी याद आती नहीं है. So the remembrance is such that we don't remember anyone else. ऐसे कौन बैठे हैं? पूछो तो सही. So किसकी याद आती नहीं है. So we don't remember anyone else except only one Baba. So Dadi is asking which ones are such कौन ones? है? Who are the ones who feel that way? चेक करो. So check yourself honestly and say to Dadi, there is no one except Baba. We don't remember anyone except one Baba. Who thinks? Who thinks that way? अच्छा बड़ी दादी होती तो Dadi हाथ उठा रही है अभी. अच्छा कोई याद ना है सुन नहीं. No one should be remembered except one Baba. क्यों बात याद आती है तो अंत मुझे कोई याद ना है ना. क्यों अंत मत मेरी अच्छी चाहिए ना. Why I should make sure that I don't remember anyone else, because I want my last moments, the final moments should be very good. दूसरा योग लगाने के लिए तो मुझे जरा सा काम नीचे पर होगा बाबा कहेंगे योग योग नहीं है. So if there is some mistake made in any task, Baba would say, oh, you are not yoga yug, that is why you made a mistake. परमात्मा सर्वशक्तिवान से कनेक्शन होते कोई बात ठीक न होए तो योग मेरा ठीक नहीं है, भगवान ठीक नहीं है. So if when I have yoga with Almighty Authority Father, so while having the yoga, if I am not able to do some task properly, so is it something wrong with my yoga or is something wrong with God? जब ब्रिज कोठी में हम थे तो पैदल करने जाते थे तो कोई धक्का खा के आते थे. फिर यहाँ लगता बाबा कहता मैं नर्स थी. बाबा कहता था इसकी बैंडेज नहीं करना. योग युक्त नहीं होगा ना. धक्का क्यों खाया? So in Bridgekoti they used to go for a walk with Baba, and some used to slip and they used to get hurt on the knees here and there. And Dadi was nurse at that time. So sometimes they twist their ankle or something like that. So Baba used to don't give them any medicine, don't put any plaster, anything, because they were not yoga yukt when they were walking. So that is why they slipped. तब से मुझे याद है मैं ऐसा धक्का बक्का नहीं खाऊं जो बाबा कहते तो योग नहीं था. So since then I always have attention on myself that when I go for a walk I don't sleep, so that if I get hurt, Baba would say, oh, you were not yoga yukt, that is why you get that experience. पाँव को मोच आ गई, योग भी ठीक नहीं था. So even sometimes when you get, your ankle is sprains, you get sprained. So then also Baba would say, oh, you were not yoga yug, that's why. ये 2 अंगुली पर मेरा गर्म पानी थोड़ा पड़ गया था. तो क्या था, बायल हो रहा था पानी. तो जब तक तभी तो कपड़ा उठाते थे ना उतारने के लिए. जब तब मेरा अंगुली पर पाँव पर. बाबा का योग ठीक नहीं था. So once Dadi was boiling the hot water, and during those days we didn't have anything to hold it, so with a cloth. So few drops of hot water fell on her finger. So Baba said, oh, you were not yoga yug, that is why this happens. एक बारी और गहरी बात सुना दूं. बाबा क्लिफ्टन पर था. हमसे बड़ा अच्छी रुझान कर रहा था, बहुत अच्छी रुझान कर रहा था. मम्मा नहीं थी. तो दादी कुमार का ने बोला बाबा मम्मा अगर होती बहुत अच्छा. मम्मा का योग ठीक नहीं था. जब मम्मा के पास आए तो मम्मा को कहा दादी ने, तो बाबा मम्मा आपको बहुत याद किया, पर बाबा ने कहा योग. मम्मा ऐसी लाल हो गई. बस नहीं, योग ऐसा हो जो एक्यूरेट. तभी फोन करवा नहीं था ना, पहुंच जाना चाहिए. योग ऐसा हो. So once Dadi sharing her experience, they were having chit chat with Baba in Clifton in Karachi. So while they were having such a wonderful time, Dadi Kumarka said, oh, if Mama was here at this time, it would have been very nice. So Baba said, Mama's yoga was not good. That's why she was not able to arrive there.
Because during those days there was no telephone or anything that you can call someone, come here, no? So they have to get the touching and arrive. So then Dadi Kumarka went and told Mama that we were remembering you very much when Baba was having chit chat. And so we told Baba. So Baba said, Mama's yoga was not good. So Mama's face became red and became quite silent like that, looking at. तो समय अनुसार अभी तो वो समय कहाँ, आज का समय कहाँ, कि इतना योग युक्त रहने का समय अच्छा है, ज़रूरी है। जो बाबा ने कहा था, जब बाबा ने टचिंग पावर, कैचिंग पावर अच्छी हो। अभी जब योग ठीक होगा, टच होगा, ये बात कर कैच कर लेंगे वायुमंडल को। According to the present time now, we should have such a yoga yukt stage that we are able to have the touching power and catching power. So we are able to catch what Baba is telling us to do at the right time. तो इसलिए प्रेजेंट समय योग युक्त वो रहेगा जो समझेगा मैं तो बाबा के साथ जा रहे हूँ सुखधाम, शांति धाम में। सुखधाम में आएंगे, परंतु पहले तो शांति धाम में बाबा के साथ जाएंगे। So who can remain in such yoga yukt stage? The one who always have this awareness that I am going home to the abode of silence with Baba. Of course we will come back to the abode of happiness later, but the awareness I am going with Baba to Shanti Dham. तो शांति धाम जानना है, ये पक्का जो अंदर से है ना भावना, बाबा शांति धाम का वासी है या आया है लेने के लिए, पावन कर्मातीत बन के मुझे जानना है। So Baba is the resident of the abode of peace. He has come here to take me back home. So I have to become pure. I have to become karmatit and go home with Baba. इतनी हमारे में पवित्रता, सत्यता, इतनी शक्ति हो जो दूसरे भी साथ चलने के लिए ऑटोमेटिक चलते रहे। We should have so much power of purity and truth within us to such an extent that others will automatically accompany us as we go with Baba. तो हम ऐसे नहीं कहते चल चल चल, ये नहीं कहते हैं। We would not ask them, come along, come, let us go. We don't need to call them. पर तो अपने आप चल पड़ते, ये तो सत्य मार्ग पर जा रहा है। अरे कहाँ जा रहा है? सभी दुनिया में इसका कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, ये तो जा रहा है, बराबर जा रहा है। Others will realize that this one is already going and they don't have any attachment, no inclination towards this old world. So they will automatically accompany them. They don't need to call them to come along with them. जब मैं कहती हूँ तो भाई हम जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, पता है कहाँ जा रहे हैं। दुनिया का ये हालत हुई पड़ी है और हमने ठिकाना पता चल गया कहाँ जाना है, तो ठिकाने का पता है तो जा रहे वहाँ की तैयारी कर ली है। So we know the destination. So because we know the destination, we have made our preparation. But seeing the present situation of the world, we have, because of knowing the destination, making preparation, we are already on our way. यहाँ शरीर में बैठे हैं, परंतु न्यारे होकर के बैठे हैं। श्रेष्ठ कर्म इस शरीर में बैठे, जो कुछ आवश्यक है वो अवश्य करना है, अभी करना है। So we are sitting in this body while being totally detached. We are sitting in this body just for the sake of performing elevated actions. Whatever elevated actions we have to do now, we have to do it now. So just for that sake we are sitting in this body. स्वधर्म मेरा शांत है, वो शक्ति अभी भरनी है। So I need to feel that strength in myself with the awareness that I am a soul, my religion is peace. और सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की ऑलमाइटी से माइट लेनी है सारी। I need to take all the might from the Almighty to perform elevated actions. और शांति धाम में जाने के लिए विक्रमाजीत कर्मातीत स्थिति ऐसी हो जो प्रैक्टिकल लगे, बराबर विक्रमाजीत कर्मातीत स्थिति से जा रहे हैं, स्थिति से जा रहे हैं। So we need to make our stage Vikarmajit, the conqueror of sinful actions, and Karmatit stage to such an extent that others can experience that we are returning home having that attained that stage. जैसे बाबा मामा को देखा, जैसे यहाँ है ही नहीं। We saw Mama and Baba whilst they were here. We felt they were not here in this world. साथ रहते हैं पर हमारे साथ में है नहीं। So we were with them physically, but the feeling was they were not with us. अभी दादी जी से मिलते हैं, जैसे यहाँ है नहीं। Now when we meet Dadi Prakashmani, we feel she is here, but she is not here. दादी है यहाँ। Is Dadi here?
हमको ही ऊपर बिठा देती है। So when we go to Dadi, she takes us together with her up above. दादी कुछ बोलो, सब So when ठीक we है। asked Dadi to say something, she said everything is okay. तो ऐसी स्थिति बनाना, अभी माना घर जाना। To create such a stage means to return home. अच्छा भाई ट्रैफिक कंट्रोल करो, Traffic control का गीत आएगा? आप ही आएगा दादी? आप ही आएगा? आप ही आएगा। अच्छा आप ही आएगा। अच्छा देखो, तो अभी ये भी आप ही जो कुछ हो रहा है ना पर्याप ऑटोमेटिक है। तो सतह योगी बना नेचुरल योगी। So constant yogi means natural yogi, everything automatic, चिंतन न चले। no waste thoughts. मोहिनी बहन को भी ये बात अच्छी लगी है। मैं देखती हूँ कौन सी, चिंतन और सिमरन में क्या फर्क है। इंग्लिश में क्या चिंतन और सिमरन में ये आप स्पष्ट करना है लोगों को। सिमरन ज्ञान का होता है, चिंतन कुछ मिक्सचर हो जाता है। Daddy was sharing one thought, so it was very appealing. In Delhi, she was saying that whenever there is a situation is happening, but when you start thinking, that's where the root changes. The situation is there, but this habit of thinking about situation, then you lose your remembrance. So I was really thinking that how important it is to stay in remembrance rather than get caught up or get involved into the situation through our thoughts. So that's what Daddy's point was, that if you are thinking, then your root has changed now and you won't be able to stay in remembrance. चिंता से छुड़ा करके बाबा ने पर चिंतन क्या होता है उनसे रियलाइज करा करके स्वचिंतन में रहने का, पर ईश्वर चिंतन में रहने का, इतना जो अंदर ज्ञान के सिमरन बड़ा मीठा मीठा होता है, अच्छा होता है, वो सिमरन शक्ति बढ़ती जा रही है। So Baba has made us realize what it means to have waste thoughts about others and taught us to remain constantly having contemplation, positive thoughts about ourselves, and that will lead into thoughts about God. So Baba has practically taught us into that practice. आगे बाबा कहते चार्ट रखो, तो चार्ट में सूक्ष्म देखना है, मुझे देह की संबंध की किसी भी चिंता तो नहीं है। So Baba usually asks us to keep chart. So in that chart we need to check ourselves to see, do I have any thoughts about body or bodily relationships? Any भविष्य की कोई चिंता तो नहीं है। Worries about. Any worry about your own body, जो relationships. चिंता, जब थोड़ी भी चिंता है ना, तो चिंतन ईश्वर का नहीं हो सकता। If you have slightest worry, then you cannot have thoughts about God. वो श्रद्धा में रहने की शांति अंदर क्या होती है, वो शांति अपना है, पता है और काम शांति काम नहीं करती है। So you know that the religion of the soul is peace, but because you have worry, that power of peace doesn't work. चिंता दुख दोनों आपस में बहन भाई है। So sorrow and worry are brothers and sisters. तो जहाँ चिंता है वहाँ ईश्वर नहीं हो सकता। Where there is worry, there cannot be God. तो बाबा पहले के चार्ट रखो, तो आगे चार्ट लिखते थे ना भाई कितना समय, बाबा को याद किया, पर घंटे लिखते थे ये। अभी जो चार्ट रखते हैं सूक्ष्म बड़ी चेकिंग करते हैं, तो हमारे में क्या कमी रही हुई है जो खत्म हो जाए, जो संपन्नता और संपूर्णता मेरे में आ जाए। Previously, when Baba used to ask us to write chart, we used to write in the chart that how many hours I remembered Baba. We used to write the number of hours we remembered Baba. But now our chart should be very subtle. So we need to have the subtle checking to see what weakness I have within myself
and how I can remove that weakness so that I am able to experience my complete and perfect form, perfect stage. तो ये अंदर से अच्छी तरह से अपना ध्यान रखना, चार पर ध्यान रखना. So Dadi wants us to keep a lot of attention on ourselves to keep such a chart. बुद्धि व्यर्थ बातों में इधर उधर गई ना, तो अंदर से स्थिति जो है ना ऐसे ऐसे है. So if my intellect wanders here and there, even slightly, then my stage will fluctuate. अचल अडोल स्थिति रहे ना, तो अपने लिए भी लगता है हर हालत में, हर बात में बाबा की मदद से ठीक है. So if I maintain unshakable and stable state, then I myself will feel that I can remain, okay in any situations, no matter what, because I have lot of help from Baba. और हमारी अचल अडोल स्थिति है ना, तो कुदरती औरों को भी थोड़ा जो भी संग साथ है ना, उसको स्थिति की मदद संयोग मिल जाता है. So if I maintain stable and unshakable stage, then those who live with me, they also get some help to create such a stage. तो वो जैसे सच्ची सेवा, सेवा भी नहीं है, परंतु मित्रता भाव है. It's not even, not even service, a true service, but it is a true friendship, feelings of true friendship for each other. अच्छा, प्रवीण टोली है आपके पास? भाई अभी जो बैठे हैं, जाओ नहीं भाई, जाओ नहीं, टोली भी कर नहीं, जाओ, बैठो बैठो. दयाल भाई? दयाल भाई, टोली तो मिले. कल किसने देखा? Yeah. Take the toli जो है today. लेके आओ, भले 2-3 प्रकार की कुछ हो, लेके जल्दी जल्दी करो. है, हाँ? एक प्रकार की ही है, लेकिन एक प्रकार की टोली है ना, खाओ टोली है. टोली खाओ तो होली बनेंगे, बोली अच्छी हो जाएंगी. So eat toli, you become holy, then you will speak very good. Your words will be good. इसलिए टोली खिलाते हैं. That's why we share toli. हाँ, क्यों टोली मधुबन में जो मिलती है वहाँ कहीं से आप लोगों को बनाने भी नहीं आती है, खिलाने भी You नहीं don't आती है. get the toli that you get in Madhuban anywhere else, but neither you know how to make it, not. मैं देखती हूँ, जहाँ जाती हूँ भोग कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं ऐसे. So whenever Dadi goes to different places, she observes what kind of bhog we make on Thursdays. फ्रूट देखते बहुत है, पर खिलाते बाबा को कैसे है मुझे पता They नहीं. have lots of fruits, of course, but what kind of fruits you offer Baba? नहीं बर्रा बाबा को इस बारी मोनी बहन देखे ना बाबा को यहाँ भोग कैसे लगाती है. Abhi. अच्छी तरह सब देखे सीख के. So in this time you must learn from here how we offer bhog here to Baba. So when मुझे किसी ने बताया, हाँ मैं बताऊं, आप लोग हिंदी मैगजीन नहीं पढ़ते हो ना, रमेश भाई ने लिखा है हिंदी मैगजीन में, आपने पढ़ा है क्या? अच्छा, मैं प्यार से मैं विदेश में सब सेंटर्स पर दादी जानकी ने अच्छा सिस्टम बना के रखा है, सब भोग लगा के खाते हैं. this time in the Hindi magazine, Ramesh Bhai has written an article and he has explained it very well in that article that how in centers in foreign countries, all brothers and sisters offer bhog to Baba systematically, eat in Baba's remembrance after offering bhog. Dadi Janki has taught all of them to do this very well. न सिर्फ गुरुवार का तो बहुत विधि पूर्वक लगाना है, परंतु रोज भी इतना प्यार से भोग बाबा को खिलाना है, तो बाबा 84 जन्म को खिलाना. Not only on Thursdays you offer bhog with love, but every day when you offer bhog to Baba with love, then Baba will feed you for all 84 births. और कुछ न हो, अच्छी तरह से खाएं, पीछे खिलाएं पहले. बाबा को पहले. जब सद्दान जहाँ भी है ना, मैं कहाँ से खाएंगी ये चिंता नहीं है, सब खावे फिर मैं खाऊं. So I don't need to worry that where will I get the food for me, for myself to eat. No, not that worry. But let me feed everyone first. Then I think of feeding myself. सब खाए कैसे, बाबा को याद करेंगे तो सब खाएंगे. Because when everyone remembers Baba, then everybody will be able to be receiving the food. मधुबन में भोजन कैसा ब्रह्मा भोजन मिलता है. In Madhuban, all of us receive Brahma बाबा Bhojan. साकार में भी बच्चों को प्यार से खिलाता रहा है. Even in Sakar, Baba used to feed Brahma Bhojan to all the children तो with मैं कहती हूँ great ब्रह्मा love. भोजन हमको मुख में खिलाता है, मुख से फिर ज्ञान सुनाता है जो कानों से सुनते हैं. So Baba feeds us Brahma Bhojan and then he speaks the knowledge to us, so we listen to that knowledge with our ears.
तभी तो हमारा चेहरा सारा चमकता है। That's why our face is constantly तो sparkling. कईयों को मैं कहती हूँ, बहन भाई शक्ल ऐसी तो हो जो तुम ब्रह्मा भोजन खाते हो, ब्राह्मण हो। So Dadi says to many brothers and sisters, your face should be sparkling because you eat Brahma Bhojan from Baba's yagya. Once Dadi was in जिस a hospital. Oh, bata. Dadi was visiting a patient, a hospital Brahmin थी, patient. एक Brahmin patient को And देखने गई she had a little container which she generally walks with, you know. छोटा सा In container hospital she can't Dadi. walk with big ones, so she had a little one. And then she started, you know, kind of sharing Toli. So all the nurses and everyone came and said, is this something in this what has made you look so young? Please give me, please give me. And that I'm talking about now 7, maybe 10 years ago. So everyone just came, oh, this is what you eat that makes you look so young? Can I have a piece? Can I have a piece? So it's really true that with the love Dadi has taught us to offer bhog and to make Brahma Bhojan and also eat Brahma Bhojan with that much love, so that when anyone looks at you, the first question they will ask you, what do you eat that you look like this, you know? How you are about to be 90 and your face looks like 19. So I think that's for true. I can give a testimony for that. नहीं, एक तो जो बाबा हमको खिलाता है ना, वही हमको खाना है। Whatever Baba feeds, that is what we need to eat. ये बरस से नहीं खाना है। Not with the taste of the tongue. मेरे को ये अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, ना ना। Not with the thought, oh, I like this, I don't like this. With that thought, I don't need to eat. भारत में कई सेंटर भोग लगाते खुले हैं। In Bharat, many centers have opened just on the basis of offering जो bhog. अच्छा भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, वो सेंटर सदा भरपूर रहता है। Those centers who offer bhog and feed others, that center is always prosperous. सदा ही भरपूर है। Always prosperous. क्योंकि बाबा को याद करते हैं ना, तो याद करने वाले के लिए और उनको सबको प्यार पैदा होता है। Because they remember Baba, and because they remember Baba, all others will have lot of love for them. मैं सब जगह गई हूँ ना, सबको कह के आई हूँ, मधुबन में गुरुवार के दिन आपका भोग लगवाएंगी। So Dadi says, wherever I have been to, खिलाएंगी। so I have told them that I am going to offer bhog on Thursday, for all of us, and सब ब्राह्मणों के पेट में जाएगा। so that Brahma Bhojan will be fed to all the Brahmins. तो समझो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पेट में बाप के याद का में रह करके बनाया हुआ जा सकता है। I am Brahmin, and only the food that is cooked in the remembrance of Baba, only that food can be fed to this body because I am a Brahmin. तो ये आज अच्छी लगी बात, युद्ध से कोई युद्ध नहीं की जाती है, युद्ध शांति से खत्म होती है। तो मन में कोई प्रकार की युद्ध न हो। Because if you want, you cannot win a battle with a battle. You have to win a battle with peace. So there should not be any battle in our minds. जिसके युद्ध मन में है ना, तो वो जो उस टाइम का जो माइंड है ना, थोड़ा अपने को भी तन को मन को ढीला कर देता है। So at the time when there is a battle in our mind, it actually weakens both our mind and body. बाबा कहाँ गया है? बाबा सामने आया, सोचने की अब युद्ध करने की वहाँ करने की जरूरत नहीं है। So when Baba comes in front of us, and when Baba is in front of us, there is no need for us to have any battling, have any other thoughts. ओके, ओम शांति। टोली आ रही है, तब तक याद में रह के Toli is coming. समझ गए ना मधुबन क्या करने So का you है? understood now what you have to do while you are in Madhuban? अच्छा, ओके। अच्छा, ऊपर नहीं, मैं आगे जाएंगी।